Okay. So what we have seen till now is sowing is the next process. This is the process in which the seeds are introduced in the soil so that it will germinate and the plants will come up. For that method, a funnel is used. The end of the funnel is attached to the pipes and the pipes are having sharp ends. Due to that, it can peer the soil and the seed will be inside the soil. I don't think this particular is working. So you certainly can do this, but I will proceed further right now. So 1 minute, last statement is left to be written. Okay. Yes. So it is not YouTube. I was a little bit worried what I did. So it is related with the Bharatiya Rushi Anusandhan Parishad. It is the Indian Council of Agricultural Research, and lot many things are shown over here, and you will like to go through this if at all you have little interest. So lot many different type of instruments are shown. So you certainly will like to go through it. सर मग तुम्ही PDF पाठवणार का ग्रुप वरती? Oh. ओके सर. सर म्हणजे तुम्ही हाताने दाखवता का व्हिडिओ? हा व्हिडिओ नाहीच आहे तो. ती साइट आहे भारतीय अनुसंधान ऋषीची. Research department related to agriculture. So wonderful information is over there. Okay, so everyone finished? May I proceed further? For 2 minutes. Yes, sir. Okay, I will wait. Excuse me, sir. Yes, please. तुम्ही ही लिंक ग्रुपवर टाकणार का? हो, हे सगळं पूर्ण मी प्रेझेंटेशनच पाठवेन. त्याच्यामध्ये ही लिंकही असेल. ठीक आहे सर. ओके, चलू पुढे. हो सर. Yes, sir. Good. So this is the picture. Over here, one can see that this particular are the 3 pipes which are entering into the soil. It may be different seeds or it may be one single seed. म्हणजे 2 धारा जर का सोयाबीनच्या लावल्या, 1 तूरची लावली तरी सुद्धा हे चालतं. And this particular is covering the seeds by the soil. Over here, that number has been increased because now it is not pulled by bullocks, it is pulled by machine. So in one stroke, one can have the particular 6 lines of seeds. Everywhere you can see the particular pointed tip going inside the soil. Not just seed, even the small ropta, that also, because for the particular rice, you don't need to, you are not supposed to put the seed. You first have to cultivate it some separately, and then the particular putting it in the soil is expected. So this is the machine which can also cultivate the particular small seedlings over there. Sir, this is for rice, na? It is for rice. What it is called as? So paddy fields. Paddy fields. Correct. Good.
Now this particular is the machine which is man-driven machine. Procedure is same. There is a one single line which will be over here. The best benefit is even one single person can drive this. And this is the particular thing which is indicating the basis of this. And all these things are the outcome of this very basic instrument. So a funnel, a tube, and the person pulled by bullock cart, and the sewing is done. Everyone understood? Yes, sir. Yes. Now, the Yes, next sir. part. Yes, sir. Manure and fertilizers. सर सोइंग हाथ से भी करते आता है ना, कैसे करते हैं? Yes, yes, obviously. But in the big fields, it is not possible by hand. सर तो हाथ से कैसे करते हो? गार्डन में वो चिमटी लेते हैं ऐसी और सीड दे देते दबाकर पानी का सॉइल के अंदर. ओके सर. एंड और सर बहुत सारे मतलब फील्ड्स में वो ऐसे लगाते नहीं है, मतलब ऐसे एक जगह खड़े के दूर दूर से फेंक देते हैं, मतलब वो पूरे फील्ड में स्प्रेड हो जाते हैं. पर that also is means it is not possible for every type of seed. सर वो गेहूं के लिए करते. हाँ सर वो गेहूं के लिए करते, वो ऐसा सीड लेना और फेंक देना. हाँ, गेहूं के लिए चलता है, मगर आजकल गेहूं के लिए भी नहीं करते, क्योंकि पहले ऐसा था कि सीड घर से ही बनता था, तो उसमें कुछ सीड्स अगर वेस्ट गया, बर्ड्स ने खा लिया तो चलता था. अब सीड्स बहुत महंगे हो गए और वो जनरली मार्केट से ही लाना पड़ता है. सो वी nowadays that particular method is outdated. Sir, that method is called as broadcasting. Yes, perfectly correct. Good. So the substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants, those substances are called as manure and fertilizers. There is a slight difference between manure and fertilizers. Manure is something like Ayurvedic, and fertilizers are something like allopathy. So may I tell the difference? Yes. Yes, sir. Sir, manure is made up by the cow dungs and Yes. the natural materials like Perfectly the correct. Good. and the fertilizers are the chemical material that is used for making, means the chemical materials are used for making fertilizer. Good. Good. नेचुरल फर्टिलाइजर्स में भी केमिकल्स रहती है कि मैन्योर भी बोल Obviously, सकते हैं? but those chemicals are in the form of mixtures. They are not separated out. पोटेशियम नहीं रहेगा कहीं पर भी. सर फिर वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर टोटली अलग है कि नेचुरल भी? हाँ हाँ हाँ, definitely, definitely. Now, why these are needed? So the reason is this, that the continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. And this is the reason why farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients, to fill the soil with the nutrients. The process is called as manuring. Improper or insufficient manuring results into weak plants. Even excess manuring will result into the weak plants. Manure is an organic substance which is obtained from the decomposition of the plant or animal waste. The decomposition is caused by some microorganisms, and the decomposed matter is called as manure.
नेचुरल मैन्योर से भी प्रॉब्लम होगा कि सिर्फ फर्टिलाइजर से प्रॉब्लम होगा? नहीं, ज्यादा नेचुरल मैन्योर से भी होता है प्रॉब्लम। अगर बहुत ज्यादा गोबर डाल दिया खेत में तो प्लांट्स जल जाते हैं। ओके सर। But the thing is this, that if suppose I add the fertilizer double, then certainly all plants will die. But if the manure is doubled, there are chances that some plants will survive, because they are going to extract the things. When they realize that this is excess, they don't extract. फर्टिलाइजर्स में भी तो नहीं है लेंगे ज्यादा? नहीं, फर्टिलाइजर में वो इंजेक्ट ही किया जाता है, वो सेपरेट ही रहता है ना, उसके कारण एलोपैथी की इसमें साइड इफेक्ट ज्यादा रहते हैं। सर Because it is the pinpoint thing, it is given directly to the plant. Sir, after studying all this, we understand that farmers have to learn a lot many things than normal men. Definitely yes यार, definitely yes, and we are lagging in that. अब वो क्या रहता है कि 4 पोती यूरिया ला लेते हैं और डाल देते हैं, जबकि जरूरत उसमें रहती है केवल आधे बोरे की। उसके लिए वो सॉइल का टेस्टिंग होना जरूरी है। उनको यही पता नहीं रहता कि सॉइल टेस्टिंग इज इसेंशियल। Yes, sir. Okay. So whether everyone have finished, may I proceed further? Yes, sir. No, sir. No, sir, 1 minute. Oh, sir. Okay. I will wait. Don't worry. सर लास्ट लाइन क्या है, वो दिख नहीं रहा पूरा? हाँ, the decomposed matter is called as manure. ओके सर। मुझे भी नहीं दिख रहा वो, मगर मुझे पता है मैंने क्या टाइप किया है। Sir, presentation guild. Sir, your screen is not visible. Yes, now it is visible. The decomposed matter is used as organic manure. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, last thing. 2 minutes. Yes, sir. Okay. But yet 2 minutes are not over when she requested, so I will wait for some amount of time. And now I think that those 2 minutes are over. Are they? Yes, sir. Thank you. Sir. Okay, good. Fertilizers are chemicals which are rich in a particular nutrient. For example, the fertilizers are urea, ammonium sulfate, sulfur phosphate, potash, NPK. NPK stands for nitrogen, phosphorus, potassium.
It is certainly true that the use of fertilizers has helped the farmers to get better yield of the crops. But at the same time, excess use of fertilizers will hamper the quality of soil like anything. Very similar to human body, the soil gets addicted to the fertilizers. यानी किसी को वो नींद की गोली लेने की आदत गिर जाती है, फिर उसको वो गोली लिए बिना नींद ही नहीं आती. The same thing happens with the fertilizers and the soil. सर फर्टिलाइजर पाउडर फॉर्म में भी रहता है ना? Fertilizer is, yeah, it is in every form. It is in powder form, it is in crystal form. As a spray also we can do that. Obviously, yes. तर पण ते सगळं पाण्यासोबतच तर मिक्स करतात. हो, कारण की पाणीच प्लांट शोषून घेऊ शकतं ना. So means the soil gets dependent on fertilizers. Yeah, but not on manures. सर मग फर्टिलायझर्स खूप असे डेंजर असतात का? म्हणजे त्यांनी काही डिझीज वगैरे होऊ शकतात का? डिसीज नाही होत. अच्छा. डिसीज नहीं होता. सर मग नेचुरल फर्टिलाइजर पे भी डिपेंड हो जाएंगे क्या? उसके ऊपर उतना नहीं होता है बिकॉज इट इज ऑलवेज इन अ माइल्ड डोज. एक्सक्यूज मी सर. येस. सर मग क्रिस्टल फॉर्म मध्ये पण असलं, पावडर फॉर्म मध्ये पण असलं, तर सर मग अर्थच काय राहिला, ते तर आपल्याला पाण्यासोबतच मिक्स करायचं आहे ना. हो, निश्चितच. आता जे जसं देणं सोयीचं असेल तसं दिलं जातं. सर मग पावडर हे थोडस महाग असणार आणि क्रिस्टल्स हे थोडेसे स्वस्त असणार, असं काही आहे का? नाही तर आता ते कसं असतं, आता युरिया जे आहे, युरिया इज नॉट इन द पावडर फॉर्म, इट इज क्रिस्टल्स. अमोनियम सल्फेट इज इन द क्रिस्टल फॉर्म. सुपर फॉस्फेट इज इन द पावडर फॉर्म. So it is like that. Whatever is its natural condition, that is provided over there. They are not made into the crystal form. नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्यों बोलते हो? केमिकल के रहते? नहीं, नेचुरल फर्टिलाइजर कोई नहीं बोलता इनको. फर्टिलाइजर्स को यही बोला जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स ही बोला जाता है. सर वो मार्केट में कब देखा था तो वहाँ पे दो टाइप के थे, एक नेचुरल फर्टिलाइजर और एक केमिकल फर्टिलाइजर. तो नेचुरल फर्टिलाइजर से ना मैन्योर हो गया फिर. मतलब अलग से नहीं लिखते क्या वो लोग मैन्योर? जिस दुकान में तू गया था वहां पर नहीं लिखा होगा उन्होंने. नहीं सर, मेरे को लगा कि फर्टिलाइजर में भी दो टाइप रहते क्या? एक ही टाइप है ना? नहीं. फर्टिलाइजर्स आर ऑलवेज सिंथेसाइज्ड केमिकल्स. सर जी फर्टिलायझर स्प्रे करायला लागतात त्यांना काहीतरी फ्लेअर म्हणतात ना? हे मला माहिती नाही आहे रे बेटा. मी बघून वाटलं तर सांगेन पुढच्या पिरियडला. ओके सर. So this point we have already said, excess use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers also turn out to be the source of water pollution. If they are excess, then this excess fertilizers are dissolved in water. That excess water goes out of the field and it contaminates the water sources which are made for the human or the cattle's. सर वो जमीन के अंदर से ही नदी में मिल जाता है क्या फर्टिलाइजर वाला? निश्चित रूप से होना ही है ना. अगर रेन आया जोर से तो वो पूरा फर्टिलाइजर्स एब्सॉर्ब नहीं होगा सॉइल से, फिर वो बहते हुए नाले से होकर नदी में जा सकता है या तालाब में जा सकता है. सर किंवा जमिनीतून अंदर जाऊन सर ते मग अंडरग्राउंड आपल्या बोर मध्ये पण येऊ शकतं. करेक्ट आहे. विहिरीमध्ये जाऊ शकतं पाणी त्याचं. So this point has to be noted that fertilizers are also source of water pollution. Can I change the slide?
नाही सर शेवटचा येस question. सर येस सर येस सर Yes, येस sir. सर. हो ठीक आहे. कोणीतरी नाही म्हणलं मी थोडासा थांबेन आणि मग करेन. Okay, so now I will change it. Sir, then which one is more preferable by farmers, manure or fertilizer? Manure is costly, beta. When we need manure of say some 100 kgs or say 200 kgs, the fertilizers which are needed are of 1 or 2 kgs. So though we know that this is going to harm us, we fall into the trap of fertilizers. But sir, we can prepare manure at our homes also. ये ऐसा बात करते हैं अपन, कितने जन अपन जो अपने कूड़ेदान में कचरा है वो तो भी हम सेपरेट करके डालते हैं क्या? It is suggested by the Mahanagarpalika that separate green and dry things in 2 different dustbins. बस ऐसा हाथ रखो और बोलो कि मेरे घर पे वो है और मैं करता हूँ. Excuse me sir. Very few hands will be there. Yes. सर पण गावामध्ये असं काहीतरी जागा असते आणि मग त्याच्यावरती ते सगळं टाकून देतात आणि मग त्याला मॅन्युअर बनवतात ना, असं पण असतं. अशा तऱ्हेचं मॅन्युअर बनवण्यासाठी तर नसतं काही अशा तऱ्हेचं, पण तसं असायला पाहिजे असं निश्चितपणे आहे. सर आहे, मी बघितलं. फारच चांगली गोष्ट आहे. जर का कुठल्या गावात असेल तर चांगली गोष्ट आहे. फक्त ते कोणाच्या मालकीचं याच्यावरून भांडणं होतील मग नंतर. नाही सर भांडणार नाही होत. बर, ते मी माझ्या शेतात न्यायचं की तुझ्या शेतात न्यायचं? मी पण तिथे माझ्या घरातली भाजी टाकली होती आणि तू पण टाकली होती, मग ते तुझं की माझं असं होऊ शकतं. Excuse me, sir. येस. Sir, then why do some farmers prefer organic farming? It's not that profitable. They worry more for the health. They worry more for the soil's health, and that's why they prefer organic farming. Okay. So Sir, but it organic should be food no? is also costly. Yes. Even the vegetables, they are having nearly about 1.5 times more costlier than the usual vegetables. Even the tablets made. Yeah. Okay. So we will continue with this. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It improves the soil with nutrients, replenishes. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately, so that one nutrient is taken by one crop and another nutrient is released by that crop. The other crop will need that nutrient and it will release the nutrient which the crop one needs. So such type of alternate things can be done, and this can be done alternately, and this will have the same story. It will enrich the soil with nutrients. The organic manure is considered better than fertilizers because it enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which the exchange of gases becomes easy and the roots are quite healthy. It increases the number of friendly microbes, microorganisms. It improves the texture of the soil. So all this particular is done by the organic manure. सर टेक्सचर का मतलब क्या हुआ? Texture means the particular, whenever you take the soil in your hand, you feel that you are taking blanket in your hand. It's a very soft soil. कभी खेती की मिट्टी हाथ में लेकर देखो, यानी ये महसूस होगा. हमारे गांव में तो आजकल मिट्टी ही मिलती नहीं है.
मगर रास्ते में गलती से कहीं मिली तो उसमें काफी सारे कंकर दिखाई देते हैं, वो चुभते हैं हात में. सध्या आता आईची शाळा म्हणजे मी ते एक तऱ्हेचं हे केलेलं आहे. त्या ठिकाणी पहिल्यांदी शेती होती. And we are having 2 buildings right now, but the remaining part is still lush green over there. So आता तिथे आम्ही हे पण घेतलेलं आहे, गव्हाचं पीकही घेतलेलं आहे उरलेल्या भागामध्ये. तिथली माती अशी हातात घेतली आणि अशी जर का हे केली तर you don't feel that you are holding some particular stone in your hand. It is very soothing touch. This is not the only meaning of texture. Texture means it is rich in nutrients, it is porous, it is having water holding capacity. It can be broken into small granules. So that is what is called as texture of soil. सर वाटर की कैपेसिटी पे कैसे अंतर गिरेगा मैन्योर से? Manure, it is having microorganisms which makes the soil porous. सर वो छेद ही ना जो पोरस हो जाता है हल्का हाँ, मगर छेद स्टोन को नहीं होता है, वो उसके हर छोटे छोटे पार्ट को छेद होता है. हमारे दिमाग में क्या आता है, छेद यानी वो स्पंज वाली बात. तो वैसा नहीं होता है यहां पर, वो और माइन्यूट लेवल पर. It is not making a stone porous, it is making a soil porous. Earthworms, cow dung, they definitely make the things porous. Okay. So whether everybody has completed? Last. No, sir. Yes, sir. Complete. Yes, sir. म्हणजे पोरॅसिटी काय असते हे जर का बघायचं असेल तर कावडंग पासून एक बर्निंग साठी इन्स्ट्रुमेंट हे बनवलं जातं, त्याला गौरी असं म्हणतात. इट इज जस्ट ड्राईड कावडंग and you can break it by hands and you can even crush it. So that will indicate what exactly the meaning of porous is. सर वैसा किया हुआ है मैंने. हाँ, तो वो जब बनाया जाता है तो वो गीला रहता है, अपने को लगता है कि इससे पूरा हार्ड बन जाएगा सीमेंट के जैसा कुछ भी. मगर जब उसको फोड़ा जाता है तो दिखाई देता है कि अंदर काफी जगह पर गैप्स है. So this is because the microorganisms, they keep on breathing, and due to their breathing the particular air is created. अरे ये इसके लिए और एक अच्छी एग्जांपल दे सकता हूं मैं. कभी डोसे का अगर ये बनाया घर पे तो वो वैसे फर्मेंटेशन होता है, उसमें रात को रखा जाता है उसको और दूसरे दिन उसको बनाया जाता है. So the things get fermented. Basically what is happening is the microorganisms are breathing in. They are releasing the gases. That process is called as fermentation. So बैटर का साइज भी बढ़ जाता है. हाँ, obviously होना ही है ना वो. So the dried cow dung is called gavari. It's not gauri. गौरी हो. म्हणजे गवर दोन मात्रा नाही आहेत त्याच्यात. सर वो क्रॉप सॉइल में न्यूट्रिशन में ऐड करते किसी है? हाँ, न्यूट्रिशन तो रहता ही है ना उसमें, because when cow eats the plants, it is digested and it is just the remnants of the plants itself. नहीं सर क्रॉप बोला है, वो क्रॉप धान्य. हाँ, वो जो जमीन में डालते तो वो सिर्फ न्यूट्रिशन लेंगे ना सर, वो देते कैसे जमीन के अंदर? वो सड़ जाते हैं पूरा वहां पर. सर आप रूट्स बोल रहे क्या जो जमीन के अंदर है? नहीं बेटा. हाँ, ये मतलब प्लांट जो लेते हैं वो रूट से लेते हैं. तो सर वो न्यूट्रिशन कैसे दे देते हैं वो जमीन के? ये न्यूट्रिएंट जो रहते हैं दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. दैट वाटर रीचेस अप टू द रूट and then root
takes the one which is whichever they want. So why do we use cow dung, sorry, dried cow dung to have fuel, like some use them for fire? Yeah, it is used. But nowadays the cows are less, so cow dung is less, and that's why this particular fuel is quite less. And nowadays it is also available on Amazon. Yes, sir. Cow dung cake. Chalo, chodo. So obviously, if the sowing is done, we add the manure, we add the fertilizer. It is necessary that that fertilizer should reach up to the roots. It will reach only if we provide proper irrigation to it. तो irrigation ये भी एक बहुत important part है crop production का. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, the minerals and fertilizers are also absorbed. And to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, the fields have to be watered regularly. और जो गलती हमारी होती है वो ऐसी कि हमारे घर में इन्वर्टर्स लगे रहते हैं, हमारे घर की बिजली बहुत कम बार जाती है, मगर फार्मर्स जो खेती करने वाले हैं वहां की बिजली बहुत बार जाती है. They always have all problems of electricity. और कई विलेजेस ऐसे हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी केवल रात को रहती है. So the farmer is supposed to go on the field at night. 11 बजे लाइन आने वाली है, वो 11 बजे जाता है, पंप शुरू करता है, and he starts watering the plant. At night, obviously, the snakes are also out for hunting. There is a life threat for this person. शर्विल मेंढे, माइक बंद करा बेटा. Sir, it is Rohit. So someone is creating lot much noise, but it appears that it is not knowingly, it is unknowingly, but it is highly disturbing. Please try to avoid this. Let me proceed further. The supply of water to the crops at regular interval is called as irrigation. Just giving water is not irrigation. Regular interval, required interval is irrigation. The time and the frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, season to season, and also the growth of the crop. Earlier, crop may need frequent irrigation, and later on it may need the irrigation after some gaps. The sources of water for irrigation are obviously wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams, and canals. So these are the different sources for irrigation.
सर ऐसे इरिगेशन का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता क्या, मतलब कभी भी पानी दिया तो चलता क्या? Generally, it is supposed to be at the evening or morning, not at the during daytime. सर लेकिन आपने बोला ना कि 11 o'clock नाइट को वो जा सकते क्या हैं। करेंगे वो हतबल रहते बेटा, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रहा है तो वो भी क्या करेंगे। ओके सर। सर वो बता सकते हैं कि क्रॉप्स को चेंज करने से ज्यादा फर्क कैसे सॉरी नीलेश प्लीज। सर वो क्रॉप्स को चेंज करते हैं तो फर्क कैसे गिरता है सॉइल पे, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या रहता है कि अलग अलग क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग रहती है। कोई एक क्रॉप ऐसा रहता है कि जिसको यूरिया बहुत ज्यादा लगता है, तो वो जमीन में का सब यूरिया निकाल लेता है। दूसरा एक क्रॉप ऐसा रहता है कि जिसको यूरिया की जरूरत नहीं है मगर उसको पोटेशियम ज्यादा लगता है, वो पोटेशियम निकाल लेता है। तो ये अगर ऑल्टरनेट मैंने यूज किए तो सॉइल की कंडीशन अच्छी रहती है। सर मतलब जो लॉस्ट मिनरल है वो रिकवर कर लेता क्या अपने आप? जी सर वो फर्टिलाइजर से भी रिकवर करता है क्या, ये और कोई नहीं, भी? फर्टिलाइजर से नहीं। क्या रहता है कि ये क्रॉप के जो ये रहते हैं पत्ते रहते हैं वो भी वहीं पर गिरते हैं। ऑब्वियसली व्हेन इट इज टेकिंग द यूरिया फ्रॉम द सॉइल, द यूरिया विल बी विद इन द प्लांट्स। So when the particular plant's leaves are falling down, at that time soil keeps on getting rich with that particular thing. मतलब वही प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट से ही वापस वो वापस मिल जाता है उसको, करेक्ट। ओके सर। सर बट इफ इट इज लाइक एक प्लांट को यूरिया भी चाहिए और पोटेशियम भी चाहिए, हाँ तो फिर उसको अल्टरनेट केस में नहीं यूज करते। सर ऐसे प्लांट्स होते हैं क्या? हाँ निश्चित रूप से होते हैं। ये मुझे नाम और उनके डिटेल्स पता नहीं है मगर फार्मर को पता रहते हैं, या एग्रीकल्चरल कॉलेज में वो बताया जाता है। यस सर। यस। So the traditional methods of irrigation, the water available in wells, lakes, canal is lifted up by different methods in different region for taking it to the fields. Cattle or human labor is used for this method, and due to that the irrigation methods are cheaper but obviously less efficient. These are the traditional methods. Moat. Moat is also called as pulley system. Now there is a bullock which is at the other end of this. This is pulled up. Though over here in your textbook, it has been shown that the man is holding the moat. It is carrying huge amount of water. So generally it is slided over here and the water comes out. There is a slider over here. सर ये वेल जैसा ही लग रहा है लेकिन। हाँ वेल में से ही पानी निकाल रहे वो, मगर ये जो मोट रहती है ये करीब करीब 50 लीटर 80 लीटर की रहती है, तो वो आदमी हाथ में नहीं पकड़ सकता उसको। ये जो यहां पर हाथ में लिया है इसको पखाल बोला जाता है, इसको मोट नहीं कहते। मोट आदमी से नहीं खींचे जाती, उसके लिए बुलक लगता है। सर मोट का पानी स्लाइड मतलब एक स्लाइड जैसा कुछ तो भी रहता है, उससे पानी नीचे आता है। यस वही तो बोला मैंने, यहाँ पर स्लाइडर रहता है, उसके ऊपर मोट रेस्ट होती है और ये रिलीज होने के बाद में उसमें से पानी बाहर आता है। तो उसमें वेस्टेज बहुत जाता है, इधर उधर गिर जाता है,
यहां से बहते बहते जाते हुए वो यहाँ पर क्रॉप एक भी नहीं है, मगर वहां पर भी पानी मिल जाएगा, क्रॉप इधर है, अब ये पानी जाकर फिर इधर आएगा, सो ऑब्वियसली इट इज वेस्टेज ऑफ वाटर. So will you please show the written part? सर कैनल किस टाइप का है? Canal means a small part which is either given water through the dams. It is generally near the dams. If you are visiting any time Aichi Shala, then over there a canal is there, and right now that canal is having water because the gehu is in field right now. So for weeds, generally they provide the water. Sir, what will happen if water particular will be gate- more in farm? Pardon? अगर पानी ज्यादा हो गया फार्म में तो क्या होगा? किसमें, कैनल में? फार्म में मतलब ज्यादा पानी दे दिया गलती से तो वो तो प्लांट सड़ जाते हैं उससे. सर आपने बताया जो सॉरी कैनाल है वो डैम से कनेक्टेड रहती है ना, मतलब डैम का पानी, तो बिल्कुल. सर फार्मर को कोई टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि डैम का पानी तो गवर्नमेंट का रहता है? हाँ, नहीं, उसमें कुछ भरना नहीं पड़ता है. फार्मर्स के लिए फ्री है वो? हाँ, वो पीने का पानी नहीं रहता है, बहुत कम बार आता है, और उससे जो गेहूं बनता है वो पूरे देश के लिए ही यूज होता है. Yes. वो फार्मर अकेला नहीं करता बैठ के. Then there is another thing which is called a chain pump. सर वो हैंड पंप रहता है, हैंड पंप जैसा रहता है क्या चेन पंप? नहीं, बताता हूँ कैसे रहता है. ये ऐसा रहता है. This is the way. Generally, it is used that there is a one lake, and my field is above that particular lake. It has to be, lake has to be at the lower level. तो फिर वहां पर इस तरह की सिस्टम लगाई जाती है. So whenever this particular goes under the water, it gets filled, it comes out. Arey, someone's mic is creating some sound. Can you put that close, or should I mute it? Thank you. So this particular comes out, it touches this particular edge. Due to that, it turns, the water falls, and then it is taken to the field. So such particular is called a chain pump. This particular is YouTube called as Dhikli. Are you able to see this particular YouTube clip? No, YouTube. sir. No, sir, you're No sir. Okay. No, the thing is this, that I am able to see this. So you can see this particular after clicking this, whenever I will send it on your group. for 1 second. Yes, it was for 1 second. Now it was visible. It was visible. ठीक है ना, जाने दो, चलो छोड़ो, ये देख सकते हो आप. So it's a wonderful thing. This is another form of Dhikli. Basically, it is reducing the efforts of the farmer. A heavy weight is attached over here, and due to that, whenever he just releases the rope up, this particular pulls it, and then this can be given to the field immediately. This is one straightforward type of Dhikli. There is another type of Dhikli, and there are several many type of Dhiklis.
Rahat or something by name liver system. Again, I won't go for this particular, but this is very wonderful thing, and it created lot much curiosity in me also. So I tried to create one small animation over here. It uses the gear which is called as beaver gear. Beaver gear, if you look at this particular picture, which is at the right lower corner, you can see that there is a vertical motion of circle over here. This wheel is going to create this type of motion. But its teeth are fixed with this in such a way that whenever this will move in this way, at that time, this particular will start moving in this way. So the motion is transferred in a perpendicular way. This is what is done in Rahat. Nowadays, this is used only in Rajasthan and some few parts of Madhya Pradesh. This is how the particular things are. There is a one shaft which you can see over here. I just extend that shaft over here. It is underground. Over here, it comes out above the ground. And this particular is not having such a sophisticated pattern. It is having such particular teeth. And now the magic comes. There is a shaft over here which goes over the back of bullocks, and the bullocks rotate over here, creating such type of motion for this shaft. And there is an interlocking over here. So whenever this moves in this direction, this will move in this direction. And due to that, this will move. And below there is a water reservoir. These containers will get filled by the water. Whenever they will be overhead, at that time water will fall in this. It will come over here. There is a low level opening at this point, and the water will come out. So in the process, minimal wastage will be there, no? Because even if that container is full, water will fall again into that water reservoir only. But that will be the wastage of energy, na beta. Yes, sir. सर आता ते पहिले नाही का मशीन्स नव्हते तर उसाचे रसी तसाच काढत होते, गाय फिरवत होते ना. अगदी बरोबर आहे बेटा, अगदी बरोबर आहे. चरकाला ते लावल्या जायचं आणि चरक चालवल्या जायचा. सर ये रिजर्वायर मतलब? Yes, sir, I have seen that. या सर रिजर्वायर क्या रहता है? रिजर्वायर यानी जहां पर पानी है इकट्ठा, वेल हो गई या तालाब हो गई. Okay. Modern methods of irrigation help us to use water economically. One of the method is sprinkler. This system is more useful on an uneven land where the sufficient water is not available. Water won't flow in one direction. So over here, the perpendicular pipes, which are having rotating nozzles on the top, they are joined to the main pipeline at regular intervals. Whenever water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles, and sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation, and several other crops. Even for weeds, you can see right now the sprinklers are going on if you are moving on the highways right now. This is the way how the nozzle of the sprinkler is. This is the way how the pipes are. They are having this particular vertical connection and they are connected in this way.
the T's and all, and this is the way how the particular connection is. There is a pump for creating the force. This is the main pipe, and the perpendicular connectors are there where the sprinklers are attached. सर बहुत सारे फार्मर्स रहते जो इकोनॉमिकली पूरे फील्ड में नहीं लगा सकते, तो वो एक ही लाइन खरीदते हैं या फिर वो बार बार चेंज करते हैं ना? ऐसा मुझे पता नहीं है क्योंकि ये उतना महंगा नहीं रहता है। नहीं सर, मैंने देखा था कि मतलब सपोज एक ही लाइन में वो स्प्रिंकलर लगाते, फिर वो शिफ्ट करते राइट? Maybe. And farmers are extremely innovative. They find out the ways and means very creatively. सर वो जमीन के ऊपर जरूरी है कि नीचे भी रह सकता, ग्राउंड के पास, ग्राउंड नहीं, लेवल? जमीन के ऊपर ही रखते हैं जनरली उसको, क्योंकि अगर कहीं पर लीकेज वगैरह हो तो दुरुस्त करते आता वो। सर पण ड्रिप इरिगेशन मध्ये जास्तीत जास्त वॉटर सेव्ह होतं हो, ते ड्रिप इरिगेशन मध्ये इथे स्प्रिंकलर सिस्टीम पाहतोय ना बेटा आपण, मग स्प्रिंकलर सिस्टीम मध्ये स्प्रिंकलरचं आपण बघूत, आता पुढच्या याच्यामध्ये ड्रिप इरिगेशन बघूत। हे बघ, so drip system, it is the system the water falls drop by drop directly near the roots. सर तुम्ही एकदा स्प्रिंकल सिस्टीमचं सांगाल का? हा, काय सांगू बेटा याच्यामध्ये? नाही सर, ते लिहिलेलं. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. Now, how this system is? The system is having perpendicular pipes which are having rotating nozzles on the top like this. And they are joined to the main pipeline at regular intervals. As one of the students told that instead of joining it at regular intervals, this joint can be moved place by place if the farmer is poor and innovative. So when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles, and sprinkler is very useful for lawn, coffee plant, and several many other plants, other crops. सर जर फील्ड छोटी असेल तर ते स्प्रिंकलर एक्स शेप मध्ये लावतात, म्हणजे एका कॉर्नरवरून दुसऱ्या कॉर्नरवर अशी. Yes, correct. सर कभी स्प्रिंकलर को जमीन के पास भी लगाते हुए देखा है, जो नीचे गार्डन में लगाते हैं, ऐसे पानी फेंकता रहता है। हाँ, क्योंकि वहां पर वो लॉन के लिए लगाया गया। अब गेहूं का खेत है तो वहां पर वो छोटे लेवल पर नहीं चलेगा, वहां पर ऊंची लेवल पर ले जाना पड़ेगा उसको। Now we will see the another irrigation system, that is drip irrigation. So over here it is by drop, and this is the way how it is done. The pipe is punctured, but generally the pipes are not above this particular, they are near to the field. This is the reality. This is just for showing what exactly is there. So here you can see the drip pipe is touching the ground. So there will be hole over here, hole over here, hole over here, over here, over here, and the water will be going directly to the roots. सर मग excuse me sir. तर मग आपल्याला जिथे म्हणजे ते लावल्यावरती होल पाडावे लागतात की ते पहिलेपासूनच असतात? नाही, त्याच्यासाठी होल असलेले छोटे कनेक्टर्स असतात. सर मग होल असलेले कनेक्टर असले तर मग ते आपण लावून
पाईप इथे कापायचा, इकडून लावायचा, इकडून लावायचा, हे झालं ड्रिप. मग पाईप इथे कापायचा, इकडून लावायचा, इकडून लावायचा, इथलं ड्रिप झालं. सर मग आपण सपोज तिथे एक होल व्यवस्थित जागेवरती लागलेलं नाहीये, तर सर मग आणि ते झाड तिकडे दूर आहे आणि ते जो छिद्र आहे सर ते दुसऱ्या इकडे आहे, तर सर मग ते काहीच युजच नाही झालं ना. नाही, काहीच युजचं झालं नाही. ते तर तसं करतच नाहीत मग. आणि झाडं जनरली सारख्याच अंतरावरती असतात. ओके सर. सोईंगच्याच वेळेला ती काळजी घेतली जाते. सर रिटर्न पार्ट. हो. रोहित, तुमचा आवाज येतो खूप. तुम्हाला डिस्टर्ब करायचं असेल तर मी क्लासमधून काढतो तुम्हाला. ड्रिप सिस्टम में प्रेशर कम करते क्या पानी का, कि वो ड्रॉप ही ड्रॉप कैसे गिरेगा फिर? लगता ही नहीं, वहां पर प्रेशर लगता ही नहीं, खाली वो पाइप में पानी रहा तो काफी हो जाता है. तो पंप से नहीं ब्रेकर डालते क्या ड्रिप सिस्टम में? नहीं, पंप ही रहता है, मगर वो पंप में ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है. और वो कंट्रोल करने के लिए कई बार ऐसा भी रहता है कि किसी ऊपर एक टाकी रहती है, उसको वो पाइप का अटैच रहता है. Now we have started giving the Right. particular. Everyone Sir. with this? एक्सक्यूज मी सर. हा, बोला. सर मी लॉकडाऊन मध्ये सर न्यूज ऐकली होती की सर कोणीतरी एका रूम मध्ये सर पीव्हीसी पाईप मध्ये सर प्लांट ग्रो केले होते. सर मग ते कसं का त्याचे रूट नाही वाढले का? वाढावेच लागतील त्याचे, तर पाईप बराच लांब असतो ना. सर तो व्हर्टिकली वाढेल ना. सर तो आपला ड्रेनेजचा जो पाईप असते ना तेवढाच पाईप होता. हा, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी छोटेसे घेतले असतील, मोठे नाहीच घेतलं असेल. पालक झालं, मेथी झालं, अशा तऱ्हेचे क्रॉप काहीच प्रॉब्लेम नाही, व्हेजिटेबल. सर मग ते पीव्हीसी मध्ये घेतले तरी चालतात का? त्याच्यामध्ये सॉइल तर टाकलीच असेल रे त्यांनी, ते वापरलं त्यांनी. सर मग त्याच्यावर त्या पीव्हीसी पाईपनी काही प्लांट वरती काही इफेक्ट नाही होत? तेवढा नाही होत, याचं कारण की ते बाहेरच्या बाजूला असतं. प्लांटचं रूट फक्त सॉइल मध्येच असतं, सॉइल त्या पाईप मध्ये भरलेली आहे. ओके सर. सर पण त्या पाईप मध्ये तर सनलाइटच नाही पोचणार ना. अरे ते पाईपच्या आतमध्ये नाही वाढतंय, ते पाईप कट केला त्यांनी. जे असणार ते हे अशा तऱ्हेचं. आता हा असा पाईप आहे की नाही. हो सर, मधातून तो पाईप काढला म्हणजे त्याला कट केलं असणार त्याला. तर याला हे असं इथून कट केलं, मग जे काही तयार झालं ते हे अशा तऱ्हेचा वाफा तयार झाला तिथे. सर मग त्या पाईपनी तर कंटेनरचं काम केलं ना फक्त. मग मी तेच म्हणलं ना, दुसरं काय बोललो मी बेटा. इट हॅज जस्ट वर्क ॲज अ कंटेनर. याच्यामध्ये लावले, मेथी लावली, पालक लावला, तर याचे रूट्स कुठपर्यंत जाणार, झालं इथे संपलं ते. ओके, फाईन. So now we have did the particular seeds placed properly, the soil is having good quality of food. Now how you can just say that the soil will allow the particular growth of crop only and not of weed? अरे weed इथे वाढेलच ना तिथे. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants, they are called as weeds. The removal of weeds is called as weeding. The weeds it competes with the crop for water, nutrients, space, light,
everything. Thus, they affect the growth of the crop, and some weeds interfere even in harvesting, and many of the poisonous for the animals and human beings. गाजर गवत म्हणून जे म्हणतात त्याच्यामुळे इरिटेशन येतं खूप. So lot many such weeds are there. It is said ना की जिथे गाजर गवत उगवतं तिकडली सॉइल इनफर्टाईल होते म्हणून. हा, कारण की ते गाजर गवत ती फर्टिलिटी सगळी पूर्ण घेऊन घेतं त्याची. मग बाजूच्या गव्हाच्या झाडासाठी काहीच उरत नाही. तर त्यानंतर असं म्हणतात ना की ती सॉइल कधीच फर्टाईल नाही होऊ शकत, असं का बरं? नाही नाही, असं विषय नाहीये, त्याला करता येतं फर्टाईल. So the tilling before sowing of the crop helps uprooting and killing of the weeds. जब ना रहेगा बाज तो कहां से बजेगी बांसुरी, तो पहले ही उसको निकाल दो पूरे इसको. So plowing is also useful for killing the weeds. I hope you remember tilling is the another name of plowing. Now the best time for removal of the weeds is before they produce flowers and seeds, so that they won't keep on germinating again and again. Now at that time we cannot use machines so easily because they don't know the difference between the crop plant and the weed plant. So generally the manual removal includes physical removal of the weeds by uprooting or cutting them close to the ground. Now if they are cut close to the grounds, so the growth of plants or the crop will increase, and then the weeds won't be having proper nutrients over there. सर ऐसे बोलते हैं ना कि जब वीड्स निकालते तो रूट से निकालना चाहिए, तो वापस ग्रो जाते हैं वो रूट्स. हाँ बराबर है, मगर अगर वो रूट से निकालना काफी मुश्किल होगा तो कम से कम उसको छाट दो बिल्कुल जमीन के पास में से, जिससे उनको धूप भी नहीं मिलेगी, हवा भी नहीं मिलेगी ठीक से, तो उनको वीक किया जाता है फिर ऐसे इसमें. So definitely uprooting is best thing, but if uprooting is not possible, and while uprooting the particular one weed, if the 3 crops are getting uprooted, then obviously uprooting won't be proper. So at that time, cutting them close to the ground is the best thing. From time to time, using an instrument by name khurpi. Weeds are also controlled by using certain chemicals which are called as weedicides. One of the example is 2,4-D. This is name of the weedicides. ये D का रीजन ऐसा है कि it is dioxomethane, so it is poison for the weeds. अरे ये वीड्स अपने आप कैसे आ जाते हैं प्लांट्स के जगह पे? अपने आप नहीं, वो रहते ही वहां पर, उनके सीड्स रहते हैं. लेकिन सीड्स तो हम लोग डालते थोड़े हैं फिर उसके अरे अंदर. तो ऊपर ये नहीं उड़ते क्या, इतने पंछी उड़ते हैं, हवा से आते हैं. So the particular soil is always helping everyone. सर फिर कोई और प्लांट भी ग्रो हो सकता है क्या पंछी के कारण वहाँ पे? जैसे किसी ने सेब का अगर बीज गिर गया तो वो भी उग जाएगा ना खेत में? बिल्कुल उगेगा. सर कुछ प्लांट्स को, जैसे कि मतलब बड़े जो जिनके फ्रूट्स रहते हैं जैसे कि पम्पकिन, वाटरमेलन, उनको इंजेक्शन देते हैं ना सर? That is malpractices. We won't be talking about it right now. Okay, sir. So the weed and weed control tools we will continue. This is the best picture of weeds. Now you can see this is the crop which I am expecting. And all around this particular crop, we can see the grass is there and it is taking all nutrients which I provide to the crop, the water which I provide to the crop, and they are growing on its own.
So to avoid such situation, we use these instruments. Generally in our area, this is most popular. In Haryana and Punjab, this is most popular. In UP, MP, this particular khurpa is more popular. So they won't be able to use this so efficiently. Sorry. And the people over here won't be able to use this so properly. Everyone is having their own skills. And if at all anybody is interested, this is that 2,4-D. It is highly poisonous. So it is sealed in aluminum foil and it is to be given with very proper care, and all those things are there. याला मराठीमध्ये तृणनाशक असं म्हणतात. Sir, if these chemicals are not used properly, they can harm the farmer also, no? 100%. Now the crop is prepared and I just kept on looking at it, then it will be ruined. So obviously at proper time, it has to be harvested. So the cutting of the crop after it is mature is called as harvesting. Harvesting in our country is either done manually by sickles or by machines. The machines are obviously called as harvester. In the harvested crop, the grain seed need to be separated from the chaff. This process is called threshing. The machine which harvests and do threshing, such particular combination of the machine is called as combine. And if suppose this particular threshing is not done by the machine, then it can be done manually and it is called as winnowing. Not only this, there are some special festivals which are associated with harvest season. Pongal is in Tamil Nadu. Baisakhi is in Punjab. Holi, Diwali is in Maharashtra. So according to spelling, it is Nabanya. But actually in Bengali, it is pronounced as Nobanna. Nobanna means Navin Anna. So new food. That is. Or in Maharashtra, it is called Pola also. No? Yes, Pola is at the time of harvesting. I don't think so. No, I Sir, said at the end of rain. It is not at the time. Before harvesting. Yeah, that's why it is not included. Bihu is in Assam. So these are the different festivals which are related with the harvesting. Now harvesting is done. I have the particular crop product with me, but immediately no one is going to buy it. So I have to store it properly. And that also is one of the major part of management of crop. So. Sir, 1 minute. Okay. Excuse me, sir. Yes. So you will send the PDF of the PDF of this presentation. Yes. You will send now. I will be sending. So don't worry about whether you are done with it or you are not done with it. I will be sending it today only. So if the harvested grains are to be kept for longer amount of time, they should be safe from moisture, from insects, from rats, from microorganisms. Harvested grains have more moisture. Hence, before storing them, the grains are properly dried.
Now for drying it, you just expose it to the sun so that the moisture will get reduced. This obviously prevents the attack by insects, pests, bacteria, and growth of fungi, because all fungi need the moisture. सर म्हणूनच गहू डाळ सगळं उन्हात ठेवतात का काही त्याच्यात हो. झालं तर? होय होय होय. इवन आपल्या घरी जे आपण आणतो वर्षभराचं धान्य, ते सुद्धा पहिले उन्हामध्ये वाळवलं जातं. हा सर तेच. Right. The farmers store grain in jute bag or metallic bins. कोठी म्हणतात त्याला. However, if the large scale storage of grain is done in soils and granaries, these granaries are prepared to protect them from pests like rats, insects. Even the dried neem leaves are used for storing food grains at home. म्हणजे अगदी घरी सुद्धा काढलेले गहू कोठीमध्ये भरायच्या आधी लिंबाचा पाला टाकला जातो खाली. For storing large quantity of grain in a big godown, the specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. Food is also obtained from animals, for which animals are reared. This is called as animal husbandry. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, why seeds are oiled before storing? Some Why seeds are? oiled before storing. Just so that the moisture won't be there. Okay, sir. सर अगर There is ठंडी a में chemical also na that is used to prevent the Obviously, yes. Yeah. Boric acid is there. Now, when we are using chemicals, it should be separated while washing the particular grain. It should not be harmful for human. is boric acid harmful? Means like what are the effects of that? No, boric acid is not that harmful. It is very organic acid. And so after while we wash the grains, it gets easily removed also. Yeah. Sir, what is trickle irrigation? What is? Trickle irrigation. Trickle is very similar to drip. It is No, sir, trickle. combination. Huh? Trickle. Trickle means it is very similar to drip irrigation. Okay, It's sir. trickling water. When pipe is above the field, it is called as trickle water. Okay, sir. The earlier slide which I showed, that is trickle irrigation. But generally evaporation reduces the efficiency of trickle irrigation. That's why it is drip irrigation. So similar to the farms of crops, there are farms of animal and they are called as animal husbandry. सर अगर ठंडी में काट हार्वेस्ट किया तो फिर वो सुखाते कैसे? ड्रायर्स यूज करना पड़ता है फिर उसके लिए. ये वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच देते क्या? उस हवा या कीमत कम आती है. So this is the list of top 10 seed companies in India, but none of them is in the top 10, or forget about top 10, top 100 world companies. सर अगर इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी के सीड्स मतलब या फिर फॉरेन में बने हुए सीड्स यूज किए तो वो टिक थोड़ी ना पाएंगे. क्यों नहीं टिक पाएंगे? वो इंडिया में जैसे लगेंगे वैसे ही बनाएंगे वो. और होता ही अगर Excuse me, sir. कंडीशंस के Yes. हिसाब से बनाए था. Yes, फॉरेन कंडीशन के हिसाब से बनाए तो नहीं टिक पाएंगे ना. obviously नहीं. सर आपने जो उस दिन टॉप 10 वर्ल्ड के जो दिखाई थी लिस्ट, उसमें की एक कंपनी ने ये जो महीको यहाँ पे है लास्ट 4th, उस कंपनी के साथ
बाइंड अप किया ना? करके काफी इसमें है टाइप्स। सो ऐसे टाइप करके अरे तो टाइप है नहीं, मार्केटिंग कर रहे उनका, बना थोड़ी रहे। हाँ सर, नहीं मेरा क्वेश्चन था कि आपने बोला था कि उनकी सीड्स हमारे यहाँ ज्यादा चल रहा है, तो वो अच्छा भी तो है ना, क्योंकि उन्होंने एक कॉटन में बीटी कॉटन ऐसा एक लाया था। अब ये अच्छा है या बुरा है, ये तो बहस की बात है यार, और ये अरे मेरे पापा ने मुझे बताया। करेंगे कभी किसी दिन। राइट नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा. सर सपोज आपण ते सीट फॉरेन कंट्री मध्ये बनवलेले आहेत आणि ते त्याच्या क्लायमेट नुसार बनवलेले आहेत सर, म्हणजे आता कॉटनला अरे त्यांना जर का ते भारतात विकायचं असेल तर भारतातल्या सारखं ते बनवतील. नाही मी ते सर त्यांच्यासाठी सांगत आहे सर. त्यांनी सपोज ह्युमिड क्लायमेट सर, कॉटनला तर ह्युमिड क्लायमेटच लागतं ना. हो सर, मग त्यांनी ह्युमिड क्लायमेटच्या नुसारच लावलं असेल सर. तर आपण ते आपल्या याच्यात ट्राय केलं तरी पण लागेल ना, आपल्या इकडे पण ते ह्युमिड क्लायमेट आहे. हो तर ते त्याप्रमाणे पण टेम्परेचरही विचारात घ्यावं लागतं ना बेटा. हो सर. तर ह्युमिडिटी नाही चालत ना. Sir, what is the long form of LTD? LTD, limited. Okay, sir. So in top 10 there are 2 Chinese companies, and China is very near to India, but we don't have our name over there. China have 2 names included. सर जो मैं बोल रहा था वो कंपनी वो सिंजेंटा है. हाँ. So with this, our information which is related with crops, production and management is over.